तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
Let me tell you a story. Okay. Can see the Brindavan gate, Yes. the silver gate? Right outside that, a person was standing, waiting for someone apparently. A Westerner comes from the darshan ground, approaches him and asks him, "Sir, can you speak English?" Okay. That person to whom he addressed turns out to be the principal of this college and the professor in English Okay. of Brindavan College. Okay. So he smiled and said, "Yes, I do." Yes. The other person said, the foreigner said, "I had the voice inside me told me that I should speak to you. Okay. That's why I came to you." And this professor, D. Narendra, he says, "Oh, you must be the person Bhagwan Satya Sai Baba said that you'll come to meet me." Oh, wow. He said, "You're the lecturer who will come to meet me." Frank Barnowski was frankly taken aback. He said, "How did this man, Baba, knew that I'm a lecturer and I've given more than 9,000 lectures? How did he know?" Oh, there must be something. And that's how the story of the aura begins. Okay. He introduces himself as a person, a scientist who has studied auras. He was gifted with this ability to see auras of every human being, even as a baby, which people around could not understand. They thought it's some witchcraft, or he was possessed or something. So he learned to keep quiet. But after he grew up, he studied, he understood what it was. He started studying this aura in great detail. He also is credited with inventing a camera called Kirlian camera, which can take photographs of auras, human auras. So to cut a long story short, he found that the aura is nothing but surrounding a light surrounding a human being, a contour of light. Yes. That reflects a mental attitude of a person and also indicates a health of that person. The aura contains a variety of colors. Red indicates anger, which is predominant in many people. Good colors, blue indicates deep spirituality. Wow. And pink, which is rare, that indicates love. Not just ordinary love, selfless love. Pure love. A person with pink aura is capable of pure love. And also another two colors which he mentions, that these are, now let me, as he was explaining like that, he was told by Bhagwan sent word, Baba sent word, that he should address the students in the evening, talk to the students. So in the evening there was bhajan in this Kalyan Mandapam. There all the students and teachers were seated. Swami asked Frank Barnowski to speak. So he told all this story and he continued. He said, apart from these two colors, pink and blue, which he found in Baba at a level which he has not found in any human being, 40, 50 feet thick, away from Baba, this pink color. He says, I've gone round the world. I've visited presidents, I've visited great political leaders, great spiritual leaders, I've visited the Pope. So many people I've seen. Never I've seen, in the case of Baba, the aura bounces along with him as he walks. Oh, wow. It expands and shrinks. And when he comes for darshan, when he moves around the people, this aura reaches out and goes and envelops each and every one's aura. Not only that, the aura which has various colors, they're all transformed into an aura of pink. That is what darshan means. Wow. That's the impact of darshan. Or maybe what, as I understand, when Baba says, darshan time, when you have darshan, you receive my grace. Probably receiving his grace is receiving that love. गजानना हे गजानना गजानना हे गजानना गौरी नंदन
मूषिकवाहन परमनिरञ्जन मूषिकवाहन पर्तिपुरीश्वर गजानना पर्तिपुरीश्वर गजानना गजानना हे गजानना गौरी नंदन गजानना गजानना हे गजानना हे शिवनंदन जय जगवंदन विद्या बुद्धि प्रदायका परम निरंजन मूषिकवाहन पर्तिपुरीश्वर गजानना पर्तिपुरीश्वर गजानना गजानना हे गजानना श्री गुरु प्रतिवासा श्री गुरु प्रतिवासा साई ब्रह्मा विष्णु महेशा साई ब्रह्मा विष्णु महेशा श्री गुरु प्रतिवासा अल्लाह भी तुम हो मौला भी तुम हो अल्लाह भी तुम हो मौला भी तुम हो
अल्लाह साई मौला साई अल्लाह साई मौला साई अल्लाह साई मौला साई अल्लाह साई मौला साई सद्गुरु साई अंतर्यामी सद्गुरु साई अंतर्यामी सद्गुरु साई अंतर्यामी सद्गुरु साई अंतर्यामी नानक साई प्रेम साई नानक नानक साई प्रेम साई नानक साई प्रेम साई ईशु साई करुणा सागर ईशु साई करुणा सागर ईशु साई करुणा सागर येशु साई करुणा सागर सर्वधर्म प्रिय सत्य साई सर्वधर्म प्रिय सत्य साई सर्वधर्म प्रिय सत्य साई सर्वधर्म प्रिय सत्य साई अल्लाह साई मौला साई अल्लाह साई मौला साई सद्गुरु साई अंतर्यामी सद्गुरु साई अंतर्यामी नानक साई प्रेम साई नानक साई प्रेम साई ईशु साई करुणा सागर ईशु साई करुणा सागर सर्वधर्म प्रिय सत्य साई सर्वधर्म प्रिय सत्य साई सर्वधर्म प्रिय सत्य साई सर्वधर्म प्रिय सत्य साई अल्लाह साई मौला साई
यशोद बाला यशोद बाला माखन चोरा यशोद बाला माखन चोरा यशोद बाला आओ आओ नंद लाला सुंदर श्याम गोपाला सुंदर श्याम गोपाला आओ आओ नंद लाला तुम ही हो बंसी धारी श्यामा बंसी धारी श्यामा अयोध्यापति सीतारामा अयोध्यापति सीतारामा पति बाबा करुणानिधान पति बाबा करुणनिधान माखन चोरा यशोद बाला माखन चोरा यशोद बाला माखन चोरा माखन चोरा यशोद बाला यशोद बाला आओ आओ नंद लाला रघुनंदना हे रघुनंदना 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 प्यारे मेरे नंदना रघुनंदना प्यारे मेरे नंदना रघुनंदना रघुनंदना हे रघुनंदना रघुनंदना हे रघुनंदना जानकी जीवन रघुनंदना जानकी जीवन रघुनंदना
रघुनंदना हे रघुनंदना जानकी जीवन रघुनंदना दशरथ तनया रघुनंदना दशमुख मर्दन रघुनंदना राजीवलोचना रघुनंदना रघुनंदना हे रघुनंदना रघुनंदना हे रघुनंदना रघुनंदना हे रघुनंदना माँ हे माँ हे माँ 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 माँ
जगजननी साई माता जगजननी माँ हे माँ। सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरम् 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 परम पवित्रं पावन चरणं परम पवित्रं पावन चरणं परम पवित्रं पावन चरणं परम पवित्रं पावन चरणं कलिमल दहनं श्री गुरु 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 चरणं भव भयनाशन दुरित निवारण भव भयनाशन दुरित निवारण भव भयनाशन दुरित निवारण भव भयनाशन दुरित निवारण पतिपुरीश्वर पंकज चरणं पतिपुरीश्वर पंकज चरणं पतिपुरीश्वर पंकज चरणं पतिपुरीश्वर पंकज चरणं भज रे मानस निरन्तरम् भज रे मानस निरन्तरम् भज भज रे मानस निरन्तरम् भज भज रे मानस निरन्तरम् सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरम् सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरम् परम पवित्रं पावन चरणं परम पवित्रं पावन चरणं कलिमल दहनं श्री गुरु चरणं कलिमल दहनं श्री गुरु चरणं भव भयनाशन दुरित निवारण भव भयनाशन दुरित निवारण पतिपुरीश्वर पंकज चरणं पतिपुरीश्वर पंकज चरणं भज रे मानस निरन्तरम् भज रे मानस निरन्तरम् भज 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 भज रे मानस निरन्तरम् सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरम् शिव शिव शिवाय नमो शिव शिव शिवाय नमो शिव शिव शिवाय नमो शिव शिव शिवाय नमो भव भव भवाय नमो भव भव भवाय नमो भव भव भवाय नमो भव भव भवाय नमो शिरडिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर शिरडिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर शिरडिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर शिरडिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर हर हर हराय नमो हर हर हराय नमो
वर्तिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर वर्तिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर वर्तिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर वर्तिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर हर हर हराय नमो हर हर हराय नमो हर हर हराय नमो हर हर हराय नमो शिव शिव शिवाय नमो शिव शिव शिवाय नमो भव भव भवाय नमो भव भव भवाय नमो शिरडिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर शिरडिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर हर हर हराय नमो हर हर हराय नमो वर्ति शिवाय नमो वर्ति शिवाय नमो शाम्ब शिवाय नमो साम्ब शिवाय नमो वर्तिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर वर्तिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर हर हर हराय नमो हर हर हराय नमो हर हर हराय नमो हर हर हराय नमो शिव शिव शिवाय नमो भवभयहरण वन्दितचरण भवभयहरण वन्दितचरण भवभयहरण वन्दितचरण भवभयहरण वन्दितचरण जयनाद जय माधव गौरी जयनाद जय माधव गौरी जयनाद जय माधव गौरी जयनाद जय माधव गौरी मंगलचरण चलिमल दहन मंगलचरण चलिमल मंगलचरण कलिमल दहन नारायण केशव नारायण केशव जयनाद जय माधव गौरी जयनाद जय माधव गौरी भव भय वन्दित चरण भव भय हरण वन्दित चरण भव भय हरण मंगल चरण जय राधा जय माधव गौरी जय राधा जय ఈశాన సర్వ విద్యాన సమస్త విద్యలు కూడాను దైవ స్వరూపమే. On inquiry, we will understand that all forms of knowledge are ఈశ్వర divine. సర్వభూతానాం God dwells in ప్రతి all ప్రాణి యందు creatures. ప్రతి ఆకారమునందు ప్రతి జీవి యందు ఉన్నది దైవత్వమే. In every form, in every living creature, there exists the divinity.
ఇది అది అని చెప్పనేది. You cannot distinguish this than that. అణో రణీయాన్ మహతో మహీయాన్. It is the smallest of the పరమాణువు నుంచి మేరు పర్వతం వరకు కూడాను దీని యొక్క స్వరూపమే. It is the manifestation of the divinity which is visualized from the smallest to the small and the biggest to the ఈ big. విశ్వమే విష్ణు స్వరూపం. The entire universe is the manifestation of God. ఈ విష్ణు స్వరూపమైనటువంటి విషయాన్ని తెల్లవారి మొదలుకొని రాత్రి పరుండనంత వరకు చూస్తూ అనుభవిస్తూ ఆచరిస్తూ ఆనందిస్తూ తిరిగి దైవాన్ని ఆశిస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఎంత వెర్రితనం! Right from the time we get up from bed and retire at night, we experience, we visualize, we enjoy the blissful company of Lord, yet we are in search of God. మన చూపులకు గోచరమయ్యేటువంటిదంతా కూడాను దైవ స్వరూపమే. All that we see is మన divine. కర్ణములకు గోచరమయ్యేటువంటి శబ్దం అంతా కూడాను దైవ స్వరూపమే. All the sound is basically మన divine. మనస్సునందు సంకల్పించేటువంటి ప్రతి సంకల్పం కూడాను దైవ స్వరూపమే. Every thought is prompted by God. హృదయం నుండి ఆవిర్భవించేటువంటి ఆనందమంతయు దైవ స్వరూపమే. Bliss that arises from heart is God. చూచున్నది, విన్నది, అనుభవించినది, ఆనందించినది అంతయు దైవస్వరూపమే ఉండగా దైవాన్ని చూడాలని ఆశించుకోవటం ఇది ఎంత వెరితనం! What all that we see, hear, experience, and enjoy is divine, but నీవు yet we క్షణ క్షణము కూడా నువ్వు దైవాన్ని దర్శిస్తున్నావు. In fact, moment to moment you see God. కణ కణమునందు కూడా నువ్వు దైవాన్ని నీవు స్పర్శిస్తున్నావు. In every cell there is God. సర్వత్రా దైవంనే నీవు అనుభవిస్తున్నావు. In fact, you experience the divine all over. स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक हरिहरेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्री
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।